Hello everyone, this is Reenu Bundel. Today I will have giving a lecture of half wave and full wave rectifier. आज हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है और क्यों रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। सो डेफिनेशन इज converting AC to DC is accomplished by the process of rectification. ये टू टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन. Rectifier. A rectifier is a device which converts AC current into direct current, and this process is called rectification. Half wave rectifier, it is the simplest type of rectifier which is made with just one diode. हाफ रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड यूज किया जाता है, जो कि हम इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं. पावर सप्लाई और रजिस्टर के साथ सीरीज में सिर्फ एक सिंगल डायोड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ए हाफ वेव रेक्टिफायर. When the voltage of the AC current is positive, the diode becomes forward bias and current flow through it. When the voltage is negative, the diode is reverse bias and current drop. जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, एंड जस्ट अपोजिट दैट इज कॉल्ड अ रिवर्स बायस कनेक्शन. Half wave rectifier circuit diagram is shown in this slide, and the waveform, this is a full साइनोसॉइडल वेव. हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सिर्फ पॉजिटिवली ही वेव कन्वर्ट होती हैं और हाफ नेगेटिव साइकिल्स में करंट ड्रॉप होती है, विच इज शो इन दिस वेव फॉर्म. Simplest process used to convert AC to DC. A diode is used to clip the input signal as conscious of one polarity to 0. फुल वेव रेक्टिफिकेशन बाय यूजिंग 4 डायोड्स. फुल वेव रेक्टिफायर्स के अंदर हम लाइक अ ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड्स यूज करते हैं और सर्किट्स दैट प्रोवाइड एंटायर पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज. फुल वेव रेक्टिफायर्स, व्हाई वी कॉल द फुल वेव रेक्टिफायर, बिकॉज इन दिस डिवाइस द होल द वेवफॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट हमें फुल वेव्स मिलती हैं. इसके अंदर पॉजिटिव भी हमें साइकिल मिलेगा और नेगेटिव भी हमें एसीज मिलती हैं. ओके. Now, working of full wave rectifier, a circuit that produces the same output waveform as the full wave rectifier circuit is that of the full wave bridge rectifier, which is I have already told you. Single phase rectifier uses 4 individual rectifier diodes connected in a closed loop bridge configuration to produce the desired output wave. The advantage of this bridge circuit is that it does not require a special center tapped transformer. It reduces its size and cost. That's why it's used mostly to convert the AC to DC. Now let's take a advantage and disadvantage of half wave rectifier. Advantage is the half wave rectifier is simple circuit and low cost. Disadvantage is the maximum theoretical efficiency is 40% and the practical value will be quite less than this. This indicates that half wave rectifier is quietly inefficient. Now, application of half wave rectifier, it is used in low power simple battery charge circuit and in the pulse generator circuit, and used in signal demodulation circuit, in the amplitude modulation radio circuit as a detector. Now, advantage of full wave rectifier, it is a higher in efficiency, larger DC power output, and ripple factor is less. Disadvantage of full wave rectifier is peak inverse voltage rating of diode is higher. Higher peak inverse voltage diodes are larger in size and costlier. The cost of center tap transformer is high. Now, application of full wave rectifier. The efficiency of rectification is higher in this rectifier circuit. It is used in various applications as a part of the power supply unit. In case of powering up of the device like motor and LED devices, these are useful. Now, for और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इसका हाफ वेव रेक्टिफायर की डिफरेंस देख सकते हैं. Here we can see the single diode is used for a half wave rectifier and the full wave rectifier center using only 2 diode, that is a full wave rectifier. When we use the 4 diode, that means it's used as a bridge wave rectifier.
In half wave rectifier, one diode and one semiconductor diode is used. In full wave rectifier, two diode or one double diode or two junction diode are used. In half wave rectifier, ordinary transformer is used, and full wave rectifier we can use center tap transformer. AC half wave rectifier, it convert half cycle of the applied AC signal into DC signal, which is shown in this waveform. This is convert only a positive cycle and block the negative cycle, and in the full wave rectifier it's give the full wave rectification in positive and negative, which is shown in this waveform. And so on, the ripple efficiencies and very difference, and the value of ripple factor in the half wave rectifier is 1.21% and in the full wave rectifier 48.2%. I hope now you can better understand about the half wave and full wave rectifier, why we use, and what is the difference between half wave and rectifier. And yes, I will soon see in the next video. Thank you. Have a nice day.